हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राधे श्याम यादव। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो किस तरह से होता है। जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में अगर फ्लो करती है तो एक रेजिस्टेंस उसको मिलता है। मतलब करंट फ्लो की डायरेक्शन में एक बाधा उत्पन्न होती है जिससे कंडक्टर गर्म होता है। तो इसको जो फ्लो ऑफ करंट है उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफर होता है और कंडक्टर गर्म हो जाता है, मतलब हीट हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज द इफेक्ट इज ड्यू टू द heat generated in the electrical circuit by the conductor. Now this heating effect is directly proportional to the square of the current, means the current which is flowing in the circuit ये उसका स्क्वायर होती है। देन रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर, मीन्स जो कंडक्टर है सर्किट में लगा हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देन थर्ड इज द टाइम टी फॉर विच करेंट इज पास्ड, मतलब जितने समय के लिए करंट पास होगा उस टाइम को टी कहते हैं, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ये सब मिल करके हमको जो हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला देता है, मीन्स हीटिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अभी हम देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है। So we know that the current flow is unit time is coulomb. So we know that the work done W equals to QV, where Q is the charge and V is the voltage. Now this W is the what? W is the electrical energy, because in this case when the current flows through the conductor, the electrical energy is converted into heat energy. So that is means heat effect will give us the heat energy. So this is W equals to QV, and we know that Q equals to I T into V, means the current flowing through the circuit is I, it is flowing for a time T, and the voltage is V. So we get the work done, that is W equals to I T into V. Now we know that by Ohm's law, that is V equals to IR. By Ohm's law, V equals to IR. So now I will replace this V with IR. So we will get W equals to I into I into R into time T, or W equals to I square R T. That means now we have come to the conclusion that the work done will be I square RT. Here also we see that W means work done is directly proportional to the square of the current, directly proportional to the resistance of the circuit, and T is the time for which current is flowing through the circuit. तो अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो W है, अभी हमने क्या कहा था कि दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द होल इलेक्ट्रिकल एनर्जी
energy is converted into heat energy H, then H will become I square R T. So this is the Joule law, that is current flowing, the heat energy produced will be square of the current flowing, that is here heat energy produced will be directly proportional to the resistance, and heat energy is directly proportional to the time for which current flows through the circuit. So this is known as the Joule's law. So in this way we can find out the heat energy, or we can say the electrical energy converted into heat energy by the formula of I square RT, and this is known as Joule's law. Now this is used in so many appliances. This heat energy effect or heat effect is utilized in so many electrical appliances. Now these appliances are, let us say first we know that heat energy, now appliances where it is used, appliances where this effect is used, number one, heater. Number two, geyser for heating water, for heating water. Then iron. So these all appliances, they will work on the. Then fourth is electric furnace. Electric furnace. So these are the appliances where this effect of electric current is utilized, that is heater. Then geyser for heating water, जो घरों में लगता है. आयरन, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं. और चौथा है इलेक्ट्रिक फर्नेस, जो बड़ी बड़ी कंपनी में यूज होता है, इसका हीटिंग इफेक्ट. सो ये जो अप्लायंसेस हैं, ये सभी हमारे यूज के हैं, और ये सब काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So now with this I have completed the heating effect of electric current, and that is important thing is you must remember, that is the formula is H equals to I square RT from examination point of view. So now please subscribe to my channel and hit the like button and press the bell. Thank you.